This part of the bulletin is brought to you by Gautam Bali Makeup Studio and Academy, Sector 1, Chanihima, Jammu. Good evening all, you're watching the news now and I am Bindia with the news at 5. Let's have a look at the headlines first. Prime Minister Modi launches RBI's Retail Direct Scheme and Ombudsman Portal for complaints. India gives relaxation in international arrival guidelines, kids exempted of testing. One terrorist tasked to carry out Fedayeen attack killed in gunfight at Bemina, top Hizbul commander killed in Kulgam. And two Bangladeshi cattle smugglers killed in an encounter with BSF in Cooch Behar borders. And now the news in detail. The Prime Minister today launched two schemes under the customer-centric initiative of RBI through video conferencing. Prime Minister said that with the advent of Retail Direct Scheme, the RDG, a large section of investors has got another platform for investment. Especially small investments will be benefited from this. At the same time, the integrated ombudsman scheme is going to protect the interests of the customers. Providing relaxation to the international travellers, the Indian government has announced new guidelines for international arriving passengers that exempt the children under 5 years of age from both pre- and post-arrival COVID testing. Issued by India's Health Ministry, the guideline further states that if the child found symptomatic for COVID on arrival or during the home quarantine period, they shall undergo testing and be treated as per laid down protocols. The government has issued the latest guideline for international travel as COVID continues to surge in other countries and will be into effect from November 12. An encounter took place on the India-Bangladesh border in the early hours today while smuggling cattle across the border. During this, border security force personnel killed two Bangladeshis, including an Indian, in the encounter. This incident happened in Setai Setbandari village of Cooch Behar. According to the information received, infiltrators from Bangladesh entered Indian territory at 3 a.m. today, made cantilever with the help of bamboo and tried to smuggle cattle heads with its help. A major success to the security forces. Two militants, including a top Hizbul Mujahideen commander, have been killed in an encounter on the second day in Savalgam area of South Kashmir's Kulgam today. The operation had started yesterday, in which one militant was killed and was suspended due to darkness. A joint team of JK police, armies, 9 RR and CRPF cordoned off the suspected spot and offered surrender to the hiding militants, who refused to surrender and instead fired at the forces. In the ensuing gunfight, one unidentified militant was killed. The operation was resumed today morning, resulting the killing of second militant, while as the search operation is still on in the area. The top officials have confirmed the identification of the killed militant as district commander of Hizbul Mujahideen Shiraz Maulvi, and Yawar Butt Shiraz was active since 2016 and was involved in recruiting innocent youth into terror ranks and several other civilian killings. Another militant was killed in a brief gunfight in Bemina area of Srinagar yesterday and has been identified as the relative of one of the accused in Lethpora attack. The IGP Kashmir, Vijay Kumar, confirmed while saying that the militant killed in Srinagar encounter is identified as Amir Riaz of Crew Pulwama, affiliated with the militant outfit Mujahideen Ghazwatul Hind, was a relative of one of the accused of Lethpora militant attack and was assigned to carry out Fedayeen attack. Earlier, officials yesterday had said that the acting on a specific lead about presence of militants near police post Bemina, and a brief shootout took place in which an unidentified militant was killed. In its attempt of making Jammu a smart and cleaner city to live in, free dustbins were distributed to the shopkeepers of market near ward number 35 and 36 by the Municipal Corporation of Jammu in presence of Chairman Swachh Bharat Mission Standing Committee Yashpal Sharma, Councillor Subhash Sharma and Secretary Jammu Municipal Corporation Atul Gupta, so as the waste from the shops is not thrown in the drains or on the streets. Secretary JMC Atul Gupta added that this will also prove helpful in segregation and waste management.
35 और 36 में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अपने दुकानदार भाइयों में डस्टबिन की डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन किया गया है। इसका मेन प्राय यही है कि दुकानदार भाई जो हैं वो अपनी दुकान का कूड़ा जो है नालियों में या ड्रेन्स में फेंकने के बजाय जो डस्टबिन्स हैं उसमें डालें, ताकि सेग्रीगेटेड वेस्ट जो है प्रॉपर डिस्पोजल फैसिलिटी में जा सके और प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। Keeping in view the demand of skill orientation and developmental avenues for the youth of Jammu and Kashmir and especially for Jammu, the Principal Secretary Skill Development visited ITI Samba and laid the foundation stone of the workshop block in this block. Emphasizing the year to be skill year for development of the UT, Dr. Asghar Hassan Samoon said that the government has taken many initiatives for development of skill of the young people in the sector and the skill development department will leave no stone unturned to help this initiative become a success. इस एरिया में आप देखिए नया डिस्ट्रिक्ट बना है 2008 में, अपॉर्चुनिटी काफ़ी आई है। एम्स यहाँ पे बना है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बाईपासेस बन रहे हैं और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसमें काफ़ी लोकल बच्चों के भी स्किलिंग अगर प्रॉपरली करें मार्केट नीड के हिसाब से, डिमांड भी है, उनको कैपेसिटी भी है ऑब्जर्व करने की। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें हम लोग डिप्लोमा ले सकते हैं, ITI का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। ज़्यादा कोर्सेज हमारे NCVT है, SCVT के हमने एग्ज़ाम्स कराए, एडमिशन भी टाइम से कराया, एडमिशन पोर्टल खोला है। इस साल हमें रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया। लगभग हमारे कोई 15,000 सीटें हैं ITIs में, गवर्नमेंट ITIs को 52 ITIs हैं, 30 प्राइवेट ITI भी है। अभी 48,000 एप्लीकेशन हमारे पास आया बच्चों में मारामारी हो रही है सीट के लिए। इसका मतलब है कि हमें काफ़ी इसमें स्कोप भी है, पोटेंशियल भी है। स्किलिंग जो है इस साल जो है 2021 स्किलिंग का ईयर माना जाएगा और स्किल इनिशिएटिव में स्किल डिपार्टमेंट हम चाहे स्कूल वालों के साथ रब्ता करना है, इंडस्ट्री के साथ रब्ता करना है, हायर एजुकेशन वालों के साथ करना है या फॉरेन मैटर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे स्किल प्लान बनाए हैं, उसमें जो यूथ है उनके एस्पिरेशंस हैं उस हिसाब से उनको एम्प्लॉयबल बनाना है। ये हमारा टारगेट है, इसमें हमें सफल होना चाहिए। इसके लिए इनको चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत हो, फैकल्टी की ज़रूरत हो या ट्रेनिंग की प्रशिक्षण की ज़रूरत हो, उस सब एरिया में हम लोग इनको पूरी सहायता देंगे। और हमने इनको बताया है टीचर्स की भी, अभी फैकल्टी की भी उनकी वेजेस बढ़ा रहे हैं, रेगुलर फैकल्टी को इम्प्रूव करा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं और बच्चों को एक्सपोजर दे रहे हैं। यहाँ जितने भी बच्चे हमने एक 360 करोड़ की निवेश से एक बारामूला और जम्मू में 2 सेंटर बनाए थे, CIIT सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, जिसमें रोबोटिक्स है, 3D प्रिंटिंग है, अभी वहाँ पे वेल्डिंग रोबोट लगे हुए हैं, आप देखिए उसके जो इंडस्ट्री के, और भी मशीन लर्निंग है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चर है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, मेगाट्रॉनिक्स है, उसमें भी एड ऑन कोर्सेज इनको दे रहे हैं। In view of the agitating vendors of Narwal Mandi, former BJP MLC Vikram Randhawa visited Narwal Mandi today and met street vendors there, assuring them of providing every help to get their vendor shops reinstalled. Vikram said that the administration must look into the needs and requirements of these street vendors who meagerly earn their livelihood. पुरजोर एक निवेदन रहेगा कि जहां ये लोग काम कर रहे हैं इनको काम करने दो। हाँ, जिस दुकान के बाहर ये कर रहे हैं उस दुकान का मालिक अगर कहता है कि हम इनको बंद करेंगे तो ये अपना दूसरा साधन ढूंढेंगे। आप 1-2 परिवारों को खुश करने के लिए, और क्योंकि उनकी यहाँ कंटीनें बन गई हैं, हाई प्रोफाइल कंटीन बन गई है, और मुझे ये नहीं समझ आता कि कुछ लोग ये क्यों सोचते हैं कि जो काम करना है मुझे ही करना है क्या। चाहे वो ठेकेदार है, चाहे वो आड़ती है, चाहे वो कोई और व्यक्ति है, उसको लगता है कि दुनिया भर की रोजी रोटी सारी मैं ही साधन जुटाऊं। अरे भैया, भगवान ने सबको सबके काम दिए हैं, हर एक को हर काम के लिए बनाया हुआ है, सबको काम करने दो, सबको पेट लगा है, सबने अपने। One person died in a tragic accident in village Bench on Jammu-Poonch highway. 2 people sitting on this bike were badly injured due to the collision with a bus. The injured were immediately taken to the district hospital Poonch, where Ahmed, the son of Muhammad Yunus, succumbed to his injuries, and the other person who was driving this bike is severely injured. Naam is Shahid Ahmed, 16 years old, son of Muhammad Yunus, RO Bench. He was brought by Muhammad Tahir, the friend. 9 AM के अराउंड यहाँ पर आया था और आधा घंटा पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था बैंक साइड में। जो पेशेंट को लाया गया था उसका GCS पुअर था, वो वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू कमांड्स। उसका फ्रैक्चर था बोथ फीमर पेल्विस डिस्प्लेस्ड, ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा था, वो हाइपोटेंशन में था, प्रोबेबली शॉक में था। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट हमने इसको यहाँ दे दिया था। हमारे सर्जन ऑर्थोपेडिशियन आए थे, उन्होंने एग्जामिनेशन किया, उनका पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल था। तो सारी इन्वेस्टिगेशन के वजह फाउंड की सीवियर इंजरी थी, ही कुड नॉट बी मैनेज्ड। हमने उसको रेफर के लिए डिसाइड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज लाइफ है।
The Shopkeepers of Court Bazaar Association Araspura, in an emergency meeting conducted today, declared Anil Sharma as the head of their association. The association took this decision looking on to the selfless work of Anil Sharma for the betterment of shopkeepers in this area and showed confidence in him for doing so in future as well. साडा प्रेजिडेंट अनिल कुमार शर्मा है और जिनी देर तक बाज़ार एसोसिएशन चाहती है उन्नी देर तक प्रेजिडेंट रहेगा। जो बाज़ार एसोसिएशन चाहेगी कि ये प्रेजिडेंट नहीं है या इलैक्शन करानी पेगी या इलैक्शन करांगे, इन्नी देर तक कोई इनू प्रेजिडेंट को बर्खास्त नहीं कर सकता। कल सर जड़ियाँ वीडियो फोटो देखिए सानू बहुत इस चीज़ ना सानू बहुत फेक न्यूज़ जड़ी है बड़ा दिल नू ठेस पुजी है, लेकिन असीं चाहते हैं कि दोबारा ऐसी कोशिश ना की जाए ताकि साडे बाजार दे विच कोई किस्म दा कोई टकराव पैदा हो। From across the world of entertainment, the first look poster of Vicky Kaushal's upcoming film Govinda Namira has been released, revealing the characters of all the three important actors of this film. The first look has Vicky along with Bhumi Pednekar and Kiara Advani. Sharing a poster for his social media account, Vicky Kaushal is seen in a dancing pose style of a Desi dancer and his character name is Govinda Wagmare. Shortly after this, Vicky shared the character poster of Bhumi Pednekar and Kiara Advani as his on-screen wife and girlfriend respectively with catchy and peppy captions. From across the world of sports, India's test squad for the upcoming series against New Zealand was announced today. The All India Senior Selection Committee picked the squad for the two-match test series starting from November 25. Newly appointed T20 captain and regular opener Rohit Sharma, wicketkeeper Rishabh Pant and pacer Jasprit Bumrah and Mohammad Shami will have been rested as a part of BCCI's workload management policy. India's squad for test against New Zealand lists Ajinkya Rahane as captain, Cheteshwar Pujara as vice-captain, KL Rahul, Mayank Agarwal, Gill, Shreyas Iyer, Saha, KS Bharat, R Jadeja, Ashwin, Patel, J Yadav, Ishant Sharma, U Yadav, Mohammad Siraj, P Krishna. Kohli may join the squad for second test and lead the team. From across the world, the Biden's US government makes the immigration easier for Indian American women in yet another immigration-friendly move. The Biden administration has agreed to provide automatic work authorization that permits the spouse of H-1B visa holders for a job there. The settlement in this regard was reached by the Department of Homeland Security in class action lawsuit, which was filed by the American Immigration Lawyers Association on behalf of immigrant spouses. And that's all in this news bulletin. For latest update and more news, stay tuned with the News Now web and keep reading the News Now e and daily print paper. Jai Hind.